What have we completed last? Then left with okay, we continue with our next part. Am I audible? Okay, we have completed Golgi body is done, lysosomes done, mitochondria done, okay, plastids. No, so we have to start with plastids. Okay, I think we are left out with plastids. The next one is vacuoles. Just two parts left. One more thing. Have we completed nucleus? Yeah, the prokaryotic, eukaryotic, everything. तुमसे ज्यादा मुझको पता है. Okay. Till we complete within 5 minutes the last part, plastids and this one, and then we come back to the previous part. Previous part में सब कुछ complete किया था. क्या complete नहीं किया था? वो तो मैंने अभी बोला इसके लिए. Good. किसने कुछ बोला? Good. Cell membrane का processes बाकी था, बाकी सब खत्म कर दिया था. So continue with the part. First we go with the part that is plastids. Now, the moment I say plastids, these are the organelles exclusively present in the plant cells. Plastids are only found in plant cells. Now, what is the function of plastids? Basically, they are storage in function. They store different types of pigments. Based upon the pigment stored, there are three types: chromoplast, chloroplast, and leucoplast. So what is chromoplast, chloroplast, and leucoplast? Chromo is the one which stores pigments, colorful pigments like xanthophylls and carotenoids. Carotenoids both there, and the carotenoids, which gives yellowish, orangish, reddish, brownish color to the vegetable or to the plant part, flower, etc. So chromoplast basically is present in the vegetables or it is present in the flowers, which gives it different colors. I hope flowers के अलग-अलग color होते हैं. That's because of the chromoplast. Chloroplast is basically storing a pigment known as chlorophyll. What is the function of chlorophyll? Photosynthesis. What is the color? It is green color pigment which gives green color to the leaves of a plant. So green ka jitna shade hai, all that is because of the chlorophyll that is present in the chloroplast. The last one is the leucoplast. What is the color? It is colorless or bola jata hai white in color. Basically it is not having any pigment but it stores starch. Amylase or starch, amyloplast or whatever, अलग-अलग नाम से जाना जाता है. But basically it is storing more amount of starch, which is commonly seen in potato. So potato का size निकालोगे तो yellow color या whitish color दिखाई देता है. That because it has more starch and it is made up of leucoplast. Okay. Like mitochondria, plastids may be, chloroplast is basically double membrane structure. Okay. So that is what is given in your book in terms of plastid. दो या तीन लाइन लिखे हुए हैं. Okay. So I think can anybody read that? Madam, can you read for me? Yeah. Starting से पढ़ें. Plastids. Structure. Plastids have similar external structure to that of mitochondria. Plastids have their own DNA, genetic material, and ribosomes. Plastids are present only in plant cells.
The internal organization of the plastids consists of numerous membranous layers embedded in a material called the stroma. Functions. Plastids are of two types: chromoplasts. Colored plastids, example, chromoplasts are the plastids which contain green pigment called chromophil and help in photosynthesis. Chromoplast also contains yellow or orange pigments. Leucoplasts, white or colorless plastids, example starch, oils, and protein granules are stored in leucoplasts. Any doubts in this part? Then normally a very simple part. So, what kind of pigment does those plants have? These colors are different from pigment. Chromoplast. अभी तो मैंने कहा ना, anything which is other than the green color is because of the pigment present in the chromoplast. Then that would give it the color of the leaves. So in that leaf, like suppose you talk about croton leaf, which is yellowish and greenish color, or if you talk about there are certain ornamental plants in orangish, purplish, reddish, brownish color के leaves are there. So children, in them the cell has both chromoplast and chloroplast. But the only difference is which will be more chromoplast. इसके लिए उनका leaf का color आपको उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है. But does it have chloroplast? Yes. उनमें chloroplast भी है, but the rate is very less. तो उसके लिए green color दिखाई नहीं दे रहा है. But why is chlorophyll present in them? Because चाहे वो कोई भी color की हो, photosynthesis सब में होने वाला है. So photosynthesis will occur, but the appearance of the color is because of the chromoplast being more and chloroplast being less. The green leaves है, इनमें ये pigment ज़्यादा होगा. This part would be comparatively less or maybe completely absent. Clear with this? Good doubt here? Okay. Next, last part is vacuoles. Now, आपके CBSE का ही part है ये. I hope everybody can see. Okay. So, what are vacuoles? Vacuoles are nothing but storage organs again. They store water, minerals, or a proper word to say that they store cell sap. Now, normally when I use the word cell sap, we are referring to plant material. Yeah, within the plant cell, the vacuole stores water and minerals. Where is the water and mineral absorbed from? From the roots. So this water and minerals are absorbed into the cell, and from cell to cell will keep on moving upwards. So this water and mineral is known as cell sap. Now, the vacuole is present in both plants as well as animals. Plant में एक बड़ा vacuole होगा, single but a meek vacuole, almost covering 70 to 80% of the plant wall cell count. Whereas in animal, there would be many but small vacuoles. So what is stored in the animal cell? So in the animal cell, the vacuole may consist of water, they may consist of certain oils, they may consist of any chemicals, etc., which are secreted by the organs. So that's about the vacuole. Now, vacuole is the outermost layer of a vacuole. ये membrane ही है, जैसे cell membrane था, वैसे ये भी cell membrane ही है. But they are given it a name as tonoplast. So the vacuole the membrane covering the vacuole is known as tonoplast. And what's the function? It has two functions to play. सबसे पहला function storage. It stores water, minerals, or other chemicals in it. Second function, specifically in plants, is gives turgidity to the cell. Can anybody say me what is turgidity? Good. Toughness. यहाँ पे toughness could be something like अगर मैं आपको मारूं, you are tough enough to bear, to bone. यहाँ पे toughness के बदले stiffness. Okay, the cell doesn't lean, it doesn't crumble. It is tough, it is stiff because of the turgidity. A very simple example to prove this is, घर पे plants है, balcony वगैरह में. If you don't water the plant for 2 or 3 days, what will you observe in terms of leaves? They become dry and ऐसे
मुरझा जाना, हिंदी में मुरझाना, इंग्लिश में wilting. So this wilting is because there is no water. Loss of water has taken place. There is no water. 2 दिन के बाद आप आए और पानी डालते हो. So what will happen? They again become fresh. Okay? 2 दिन में मरेंगे. But if you are absent for 15-20 days, तो शायद plant मर जाएगा. So that 2 days, for that timing, they have become limp, and after that again they are swollen up. This phenomenon is known as turgidity. So water present, they are turgid or turgidity. If water is lost, they become shrink. They lose their water content, so they become limp. Am I clear? Okay. So that completes your vacuole part, and that completes the part which is given. Now 2 parts are left. Very important part to understand. हमने सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था. स्टार्टिंग का पार्ट कर दिया था. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन कर दिया था. So here, if you see, it is this is what cell membrane or plasma membrane is all about. Okay, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन छोड़ा कोई होता नहीं ना. ऑनलाइन कोई नहीं होता यहाँ पे. Okay, so from current slide. Hide floating meeting contents. Okay, ये क्या था? वो कहाँ गएगा? अरे यार, how to bring it back? Anybody? One more time. Share screen. Basic. Screen. Share. I guess a floating chart control. Okay. मतलब here if you see this is a cell membrane. दिखने में पतला लग रहा है. It's a thin layer, but ultimately made up of 3 layers, 3 sub layers. Okay. There is a lipid, and then there is a protein, and then again lipid. So basically lipid के 2 layer होते हैं और उसके बीच-बीच में proteins होते हैं. So chemically a cell membrane is made up of lipoprotein, lipo, lipids, and protein combination. It is selectively permeable. We already spoke about it. What is selectively permeable? Semi-permeable. Allows certain things to move and allows certain things to not to move. So depending क्या move करना है क्या नहीं move करना. Based upon this, children, book में जो function दिया हुआ है आपकी, it gives definite shape to the cell. थोड़ा बहुत shape maintain कर रहा है in terms of animal cells. It separates the content of the cell from its surrounding medium. So it's like a compound wall of your building. Compound wall के अंदर तुम्हारा area, compound wall के बाहर public area. Something like that. It separates the content of the inner part and the outer part. It provides mechanical barrier for the protection of the internal content of the cell. So whatever content are within the cell membrane, they are well protected. Cell membrane की बाहर cannot be protected, but within the membrane they are protected. It is a selectively permeable membrane. Means it is a selectively permeable or semi-permeable membrane. Based upon this, we say it regulates the movement of ion in and out of the cell. Again, this movement in and out of the cell, all this takes place by various processes. So what are the various processes? This is what we are going to study across. Transport of material across the plasma membrane. Materials move karte in and out through a process known as this. So diffusion, osmosis, plasmolysis, endocytosis, and exocytosis. इसमें से कुछ भी सुना है? कौन सा? Diffusion और osmosis और बस 2 तो सुना है. Can anybody say me what is diffusion? Separate. So what is osmosis? Innately. लगा मुझे. मेरा interpretation था. Anybody? Okay.
Then, when I say diffusion, what can you see in this diagram? I've taken a beaker filled with water. I just put a drop of ink. I hope everybody has done this somewhere. It's a drop of ink. So which is higher concentration, ink or water? Ink is उस drop में. So ink is at a higher concentration than the drop. The water is at a lower concentration. So this, the moment I put a drop, the molecules of the ink start moving in and they start diffusing into the water. What would you observe after half an hour? The entire water becomes blue color. तो पहला सिर्फ एक ड्रॉप था, अब वो पूरा ब्लू कलर का पार्ट बन चुका है. Then this is what I mean by diffusion. The movement of molecules of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. When the two are in direct contact is known as diffusion. तो यहाँ पे it is the free movement of molecules of a substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in direct contact. Now, the diffusion or osmosis is almost same. In fact, osmosis is referred as special type of diffusion. Then we say, sir, kya far hai? Then, when I say diffusion, from where does the molecule move from? Higher to lower. Okay, and when the molecules are in direct contact. So, but these molecules can be solid, liquid, and gaseous. So diffusion primarily occurs in all the three mediums: solid, liquid, and gases. We take examples to understand. Solid liquid का example लेते हैं. पानी का ग्लास लिया, उसमें शुगर क्रिस्टल डाले, potassium crystal डाले, या you put salt crystal, you stir, what will happen? It dissolves. After some time, can you see the sugar crystal, salt crystal, potassium permanent? So where was the higher concentration of sugar? In the crystal. Where was the lower concentration? In the water. After some time, what is happened? Equal distribution has occurred, dispersed हो चुका है, then that is known as diffusion. समझ में आया? सॉलिड लिक्विड समझ में आया? सिंपल. लिक्विड लिक्विड क्या होगा एग्जांपल? एक तो दिया है ना, इंक एंड वाटर. दूसरा मैंगो सिरप एंड वाटर, रूह अफ़ज़ा एंड वाटर, के एनी जूस एंड वाटर, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाटर. आई होप ना, दारू, अल्कोहल, पानी में डाला और पिया, वो भी तो डिफ्यूजन ही है ना. Which is the higher concentration? Alcohol. Where is the dilute form? Water. Mix किया सब कुछ. Okay, that's again diffusion. So now can you give me example of gaseous? कभी पूजा करते हो? What is it? The incense stick से smoke निकलता है. It diffuses into the environment. So from a higher concentration to the part. Perfume ka bottle. Press the perfume bottle over here. The smell diffuses into the entire room. Second. Third. Try करना. Proper example of diffusion gaseous. घर पे जाना आज, बोर हो रहा है, LPG का पाइप खींच लेना. Okay? Nice diffusion will take place. और कुछ ज्यादा ही बोर हो गया होगा? Okay? सभी को लेके जाओगे. So then that's again a diffusion. Am I clear? So then diffusion occurs in solid, liquid, gaseous. The molecule move from higher to lower when the two are in direct contact. Now, osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable membrane from a weak solution to a strong solution. Now, what do you mean by this? Is the diffusion of water. When I say diffusion, matlab kya? Higher concentration to lower concentration.
So it's the movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration across a semi-permeable membrane. So osmosis का सबसे important चीज है across a semi-permeable membrane from a weak solution to a strong solution. Am I clear? जो लास्ट का पार्ट नहीं समझ में आया सब जाता हो. Fine. Now pay attention onto the board. We have a huge beaker. In that we put a semi-permeable membrane. अब दोनों साइड में अपन लेबल करते हैं A part और B part. A part has water, B part also has water. अपन water को दिखाते हैं ब्लू कलर के रिंग से. So how many molecules of water are there in A? 12. On B? 12. Can I say the concentration of water across the membrane is same? दोनों जगह same है. Okay. Now in the A, I put some salt. Salt समझ में आया? So I just put salt, sugar, whatever. Okay. The moment I put salt and sugar, it will diffuse into that. Then यहाँ पे you are playing musical chair. So what happens? The salt molecule occupies this place in water. It occupies a space in water. So how many water molecules are left in it now? कितने? 7. Then अभी वो occupy हो चुका है, water नहीं है. It has been occupied. It's like empty chair. आप बैठ चुके हो. तो खाली chair कितने जो बचे होंगे वो? So how many are left? 6 plus 1, 7. Now how many are there in B? 12. How many are in A? So which has more water concentration? B. So as per the diffusion rule, water moves from higher to lower. So where is higher? Where will the water move? A. इतना समझ में आया? Everybody? Okay. Now I give them both of them a glass. दोनों को glass दिया. दोनों के पास 1 लीटर पानी दिया. Okay, both of them have 1 liter of water. To her, I give 10 ml of juice. Yes, sugar, juice syrup है. इसको 2 ml of syrup दिया. 10 ml, 2 ml. I took it into a jar. In that she poured 1 liter of water. She also pours 1 liter of water. Which is more diluted? किसमें ज्यादा पानी? 20 ml with 1 liter or 2 ml with 1 liter? 2 ml with 1 liter. So 2 ml से 2 molecule occupy करेंगे, बाकी सब पानी free है. 20 ml मतलब 20 molecule occupy करेंगे, बाकी सब free है. So अगर मैं 1 liter में मानता हूँ 100 molecules है, तो 100 में से 20 occupy हो गए 20 ml में से, so 80 बचे. इसमें 100 में से सिर्फ 2 occupy होंगे, so 98 बचे. So which is more water? This. So then, where there is more water, can I say it is dilute solution? और जहाँ पे sugar मतलब पानी कम है, salt is more, we say it as concentrated or strong solution. Okay. So now children, osmosis अलग-अलग type से लिख सकते हो. एक ही definition है. बस सिर्फ लिखने के तरीके अलग है. पहला definition, the movement of water molecules from its higher concentration to its across semi-permeable membrane is known as अपन studied movement of water molecule from higher concentration to lower across a semi-permeable. ये हुआ पहला definition. So first definition is in terms of water concentration. समझ में आया? दूसरा definition,
the movement of water molecules. See, the movement of water molecules from more dilute solution to a strong sugar solution, a strong concentration solution, a strong solution across a semi-permeable membrane is known as osmosis. Is it same meaning? Yes. सिर्फ पानी के बदले हमने more dilute या weak solution, अपन dilute के बदले weak लिखते हैं. So from a weak solution it has moved to a strong solution. तो अपन ने यहाँ पे concentration of solution के हिसाब से define किया. From a weak solution to a strong solution. तीसरा definition, same again, the movement of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution. Definition का मतलब वही है, सिर्फ words change हो गए. So all this is known as osmosis. Am I clear? Osmosis can only occur in water and not solid and gaseous. So liquid में ही हो सकता है. आगे बढ़ो. Next. So osmosis में चिल्ड्रन air water concentration. So इसको osmosis, diffusion of water molecule across semi-permeable membrane to a less dilute solution is known as osmosis. Based upon the solution, there are three types of solution identified. That is known as isotonic, hypotonic, hypertonic. चिल्ड्रन वापस याद रखने के लिए सिंपल लॉजिक यूज करना है. इसमें पानी ज्यादा है, बी, इसमें कम है, ए. अब मान लो मैंने इसमें भी सॉल्ट डाला. I put some salt over here and it occupies, which has more water. अभी B है, and which has less water, A. Which has more salt, A, and which has less salt, B. Then अब इनको बोला जाता है based upon this there are two different solutions. अब एक होता है hypertonic, दूसरा होता है hypotonic. अभी याद रखने के लिए सिंपल, हाइपर मतलब मोर, टॉनिक मतलब सॉल्ट या सॉल्यूट. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पता है ना, केमिस्ट्री में होता है. सो दिस इज सॉल्यूट. हाइपो मतलब क्या होगा, लेस. टॉनिक मतलब सॉल्ट या सॉल्यूट. सो जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है उसमें वाटर क्या होगा, वाटर वुड बी लेस. सॉल्ट ज्यादा होगा तो पानी कम ऑक्यूपाई होगा, सो पानी लेस होगा. यहाँ पे सॉल्ट इज लेस, सो वाटर वुड बी मोर. सो वेयर विल द वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू. So where is osmosis taking place from? Hypotonic to hypertonic solution. तो अब चिल्ड्रन हमेशा पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ हुआ. सो ऑन दिस बेसिस आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है वॉल्यूम. इफ आई टेक अ बीकर और इस बीकर में एक सेल डाल दूं and the solution outside it is hyper. Okay, simple है. If I say क्या she is a clever girl या she is smart, तो किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ? You are scholar or you are smart or you're a good child. With what respect? No, something else. चल मैं इसको स्मार्ट या गुड या इंटेलेक्चुअल कब बोलूंगा, जब कंपैरिजन के लिए कोई और होगा ना.
अकेली स्मार्ट तो हो नहीं सकती। हाँ, ये स्मार्ट है, बेटर है, या ये हाइटेड है, इसका मतलब कोई और उसके कंपैरिजन में छोटा है। चलो यहाँ पे अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा? उल्टा ना, इट वुड बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो प्लीज ध्यान देना, मुझे आपको 12th में काम आएगा, 12th 11th और 10th में, वहां पे ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करते बैठने वाले। सो आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन दिस पार्ट, इसलिए मैंने बाद में रखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब हाइपर है, हाइपो है, एज पर द रूल पानी कहां से कहां मूव होगा? हाइपो टू हाइपर, तो पानी सेल से बाहर निकलेगा। सो व्हाट विल हैपन टू द सेल? द सेल वुड श्रिंक। सेल से पानी निकला तो सेल श्रिंक होगा। समझ में आया? अब अगर दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर सेल रखा एंड द सॉल्यूशन आउटसाइड इज हाइपोटोनिक, तो ये क्या होगा? हाइपरटोनिक। तो पानी कहां से कहां मूव होगा? हाइपो टू हाइपर। सो वेयर विल द वाटर एंटर? इनसाइड द सेल। तो सेल क्या होगा? स्वेल होगा। समझ में आया? तीसरा पार्ट, वापस सेल लिया और ये आइसोटोनिक है। व्हाट इज आइसो? सेम, मतलब सॉल्यूशन बाहर और सॉल्यूशन अंदर सेम है। विल देयर बी एनी मूवमेंट? नो। सो व्हाट विल हैपन टू सेल? रिमेन एज इट इज। आइसोटोनिक कभी नहीं गिरता। Okay, so isotonic, the concentration across the membrane is same, so nothing will happen. There is no osmosis taking place. इसको बोलते हैं no osmosis, इसको बोलते हैं exoosmosis, exo मतलब बाहर जा रहा है पानी, और इसको बोलते हैं endoosmosis, पानी अंदर आ रहा है। समझ में आया? अब 10th में या हायर लेवल पे what they are interested is this. If I place a cell in a hypertonic solution, तो क्या होगा? If I place a cell in a hypotonic solution, तो क्या होगा? तो simple way to remember. Hyper मतलब बड़ा मोटा, सेल होगा छोटा। उल्टा, हाइपर मतलब बड़ा मोटा, सेल होगा छोटा। हाइपो मतलब छोटा, सेल होगा मोटा। Okay, so that's how you can remember in a part. Any doubts in this part? Okay, so we have completed isotonic, we have completed hypotonic, and we have completed hypertonic. Then अगर definition देखोगे तो सिर्फ एक word का difference है. In this condition, the solution outside the cell has higher solid concentration than the fluid inside the cell. अगर पहले वाला देखोगे, in this condition, the solution outside the cell has lower, सिर्फ higher और lower का difference है. Concentration than the fluid inside the cell. तो वहां पे एंडोस्मोसिस होता है, वहां पे एक्सोस्मोसिस होता है. हाइपो लेस सॉल्ट्स जो मैंने लिखा था वही लिखा है. Next we undergo is the process known as endocytosis. अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर दिया. Then they give significance of osmosis. So what is significance of osmosis? It allows the water to move inside the root as well as helps in opening and closing of the stomata. Next is endocytosis and exocytosis. Can you see the amoeba? अगले साल डिटेल में पढ़ोगे. Amoeba move towards the food source. Food है ये. Okay? So amoeba is a irregular shape. It moves with the help of pseudopodia. Pseudopodia मूव करते करते फूड कैसे जाएंगे? अंदर ले लेगा. फूड पहले बाहर था, अब फूड क्या है? अंदर है. So this taking in of food by amoeba due to the flexible cell membrane is known as endocytosis. When any particle enters inside the cell due to the flexibility of the cell membrane, it is known as endocytosis. And the endocytosis समझ में, endo मतलब inside, cyto मतलब cell, so inside the cell, तो अंदर आ गया.
ओके, इसको अपन फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। फैगो मतलब एंगल्फिंग। देन उससे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, दोनों में सिंपल डिफरेंस है। हवा अंदर लेते हो और खाना अंदर लेते हो, दोनों में डिफरेंस है। एक को क्या बोलते हैं? ईटिंग, दूसरे को ब्रीथिंग। चल, अगर मॉलिक्यूल सिर्फ अंदर आ रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। Okay, so all taking in is known as endocytosis. पर उस प्रोसेस में स्पेसिफिकली अगर वो डाइजेशन के लिए आ रहा है तो उसको बोलेंगे phagocytosis. Engulfing is known as phago. Then comes, अगर एंडो समझ में आया तो एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? It's going out of the cell, excreting out of the cell. इसलिए डायग्राम में एक्सोसाइटोसिस, जो खाना अंदर आ गया था वो ये था। ओके, अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, बचा कुचा जो होगा दैट विल कीप ऑन मूविंग आउटर साइड, बाहर निकलते निकलते इसको टच करेगा एंड सिंपली बर्स्ट ओपन। तो जो अंदर था वो बाहर आ गया। अ प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस, अगेन ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेंबर। कोई डाउट है? Sure, and that completes your endo, exo, osmosis, diffusion, etc. Osmosis थोड़ा confusion है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। We repeat quickly. What is diffusion? Movement of molecules of a substance form when the two are in direct contact. So what is osmosis? It is a movement of water molecules from a region of higher concentration to across semi-permeable membrane, or I can say the movement of water molecules from a weak solution to a strong solution across a semi-permeable membrane, or from a dilute solution to a concentrated solution across a semi-permeable membrane is known as osmosis. समझ में आया सबको? Shall we go ahead? Next. सेल वॉल हमने कर दिया था, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कर दिया था। We are left out with another part, that is nucleus. Okay. So what exactly? ठंडा लग रहा है क्या तुम्हें? तो बोलो ना, बोलो साहब। दिक्कत है शक्ल पे 12 बजे पर बोल कोई नहीं है। थोड़ा टाइम के लिए बंद कर देते हैं so that it comes to normal temperature. वो भी तो बटन शायद पीछे ही है। तो कितना आखिर इसका वायर का बटन उधर है, तो बटन ये चालू कब होगा? बटन बंद करके बंद है टीवी। टीवी बंद कर पीसी बंद माहित नाही। नहीं पीसी तो चालू है। आ जाओ बैठो, वो आ जाएगा। कम अरे आजा तू बैठ जा। तुम्हाला बटन एसीचं बटन बंद करायचं। थंड झालं खूप थंड होत होतं म्हणून त्याने बंद करत होतो। आता मी चालू केलं। कुठलं बटन आहे? हा पुढचा एसी चालत नाही। चालू होता मॅडम, बंद केलंय। खूपच थंड झालं आता सध्या काय नको, पण टीव्ही चालू झाला। Okay, we go into the last part, that is your nucleus. Okay, now the movement as a nucleus, it was first discovered by Robert Brown. Okay, हमें रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किया, ये रॉबर्ट ब्राउन है।
हर एक नाम का अमिताभ एक्टर होगा जरूरी है क्या? यहाँ पे रॉबर्ट हुक वॉज, रॉबर्ट ब्राउन वॉज न्यूक्लियर। जाके खिचड़ी बिरयानी मत पका के आना हुक और ब्राउन के बीच में, जैसे इसने पकाई। Okay, so now then when I say Robert Brown, he discovered the nucleus of nucleus when it is present in a cell. Thank you, madam. When the nucleus is present in a cell, we say it as a nucleate and then nucleate. अगर present है तो nucleate, अगर absent है तो anucleate. अगर प्रेजेंट है तो पहले नीचे वाला पार्ट समझेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट। अगर प्रेजेंट है तो सिंपल है, एक तो सिंगल सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, या एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, या तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, जैसे होंगे। अगर सिंगल है तो बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट, तो दो होंगे तो बाइन्यूक्लिएट, अगर तीन होंगे तो ट्राइन्यूक्लिएट। अब उसके ज्यादा होंगे तो अपन टेट्रा वगैरह मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तो अपन सिंपल बोलेंगे मल्टीन्यूक्लिएट। अब यूनिन्यूक्लिएट के एग्जांपल, अमीबा यूनिन्यूक्लिएट है, प्लाज्मोडियम स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएट होता है। Okay, then we have endamoeba uninucleated, then we have your paramecium is binucleate, yeast is uninucleate. Okay, so majority of our body cells are uninucleate, but binucleate में आता है paramecium, euglena, ये binucleate होता है। multinucleate में some of the elements, then fungi में some of the fungi, and last में our liver cells are multinucleate. Do we need to learn this? No, अपने काम का ये नहीं, ये भी नहीं। अपने काम का कौन सा है? ये वाला anucleate. What is anucleate? Without a nucleus. A मतलब not. So enucleate या anucleate means without nucleus. अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था, अगर एक सेल है उसको 3 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। व्हाट आर दे? होमवर्क क्या था पता है कोई? होमवर्क क्या था? व्हाट इज माय डिफॉल्ट होमवर्क? वेरी गुड। अभी शायद याद नहीं आ रहा होगा, है ना? आपको वैकेशन छुट्टी है कब से कब तक? 1 से 21। उसके बाद 9 डेज आओगे ना? 9 डेज में मैं आपको पिक्चर ट्रेलर सब कुछ दिखा दूंगा होमवर्क क्या होगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। That time you will come to know what is exactly the meaning of homework. Okay? जब यूटी में 9 घंटे बैठोगे ना तो समझ में आएगा होमवर्क क्या होता है। By default you're supposed to learn whatever I taught you last. Okay? तो कितना पढ़ाई कर रहे हो वो वैसे भी दिख रहा है। The 3 defining features: a cell membrane, cytoplasm and a nucleus. अगर ये 3 है तो वो सेल है, अगर नहीं तो नहीं। तो ऑब्वियसली when I say anucleate, इसका मतलब है उसमें न्यूक्लियस नहीं तो सेल कैसे होगा? The reason is you can see example of anucleate: mature sieve tubes, mature RBCs. So what do you mean by this is जो mature human RBCs होते हैं, हमारे बॉडी में RBCs होते हैं, they are formed in the bone marrow. What is bone marrow? बोन के अंदर जो ब्राउन पार्ट का जो सब करके आप खाते हो, अगर जो नॉनवेज खाते होंगे तो फॉर देम विद इन दैट देयर इज अ ब्राउन सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज बोन मैरो, जिसके अंदर आरबीसीज बनते हैं। तो जब बनते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, बट एज दे मैच्योर और जब ब्लड में सर्कुलेट करना चालू हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब इट इज लॉस्ट। सेम वे मैच्योर सीव ट्यूब्स, ये अभी पढ़ोगे। Sieve tubes are nothing but a part of phloem cells. Xylem और phloem सुना होगा, तो phloem का component है sieve tubes
जब बनते हैं न्यूक्लियस होता है, और जब मैच्योरिटी होती है न्यूक्लियस चला जाता है। अ सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल, भगवान ने हम सबको पैदा किया, हाँ या ना? सो पैदा करते वक्त भगवान ने हमारे बॉडी में छोटा सा पार्ट डाला है, ब्रेन। सब में होता है। व्हेन यू आर born, as you mature, fill in the blanks. Okay, so that's the part we say as a nucleate. Am I clear? Then nucleus का diagram, this is what a diagram of a nucleus looks like. Okay, I think we'll complete this next lecture. Next lecture में 15 मिनट में chapter खत्म हो जाएगा, and then we start with our next chapter. स्कूल में चालू हुआ कुछ इसके अलावा? ये भी चालू हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसके बाद अपन तीसरा चालू करने वाले सेकंड चैप्टर। सो नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट 21 के बाद ना, गुड। चल तब मत पढ़ के आना। आई विल डेफिनेटली शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली होमवर्क। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। 7:30 का अगर आपका लेक्चर होगा, शायद होगा, तो आपका 3 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स मतलब 6 घंटे का। उसके बाद आपने होमवर्क नहीं किया होगा मेरा, तो मेरा 9 घंटे का होता है, तो आप मुझे 3 घंटे एडिशनली कंपनी दे दोगे। और माँ बाप तो खुशी खुशी तुम्हें डब्बा भेजेंगे, सर बेटा के साथ 9 घंटा क्या 12 घंटा बेटा करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बोल बोल, कौन सा चैप्टर? यही सर, तो उसमें न्यूक्लियस वगैरह सब आएगा। नहीं, मैं अल्फीटूरेट के न्यूक्लियस में, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। मुझे लगा कि मेरा चैप्टर खत्म, सिर्फ प्रोकैरियोटिक बात नहीं, वो भी पढ़ा है। ठीक है, आई विल सी टू इट क्या न्यूक्लियस का पार्ट भी करोगे।